Me great pleasure now to bring on board Minister Prahlad Joshi to talk about the coal and the mining sector. Exciting things have happened on that front. Everyone is excited to understand that what really could be the next big trigger for the entire coal and the mining sector, how essentially Coal India is planning to increase the production, and given that now the rare metal mining is going to be the reality of the day, what else we should expect in terms of a large reform coming from this sector. Minister Joshi, Namaskar, what a pleasure to have you on ET Now, sir. Thank you very much for joining us. Thank you. Minister Joshi, my first question is perhaps a compliment in itself, that a lot has changed for domestic coal production. The domestic coal production is up almost 10%. Every time ahead of winter, we would be worried as Indians that हमारे घर में बिजली आएगी नहीं आएगी. What will happen to coal supply? What will happen to the entire feedstock availability? मगर लगता है that इस बार ठंड के अंदर हमारा हीटर सबका चलेगा. इसमें कोई डाउट नहीं है. हमने जो गत 10 साल से मोदी सरकार आने के बाद जो कुछ भी बदलाव लाए हैं, और स्पेशली अभी 2020 और 21 में जो कमर्शियल कोल माइनिंग के साथ ही साथ तो कैप्टिव कोल माइनिंग में जो बदलाव हमने लाया है, उसके जो रिज़ल्ट अभी दिखना शुरू हुआ है. जैसे आप सब जानते हैं कि वी वर जस्ट प्रोड्यूसिंग अराउंड 500 odd million tons of coal in 2014-15. Today we are reaching almost 1 billion. अगर CAGR के हिसाब से, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ के हिसाब से देखें तो आज उसी हिसाब से हम प्रोड्यूस करते तो मैक्सिमम हम 700 मिलियन टन प्रोड्यूस करते थे, लेकिन वी आर रीचिंग अराउंड 1000 million ton, that is more than 1 billion ton we are producing, and our import will be considerably reduced. And I am assuring the country through you that under the leadership of Prime Minister Shri Modi, there will not be any shortage of coal and shortage of electricity, that is power this time. And this is maintained last year also, but there was some apprehension. But even now I am ruling out the apprehension also, and I am assuring the country, and we will cross 1 billion, and whatever the substitute coal is there, that import will be stopped entirely next year, that is 24-25. Sir, allow me to just quote you. This is something which you indicated on 31st of December. The demand for electricity by 2030 is going to double, and to cater the needs, the country needs coal. India's per capita electricity consumption will double by 2030. Now, if the demand will double, do you think by 2030, if India has to reduce the dependence on coal, they will be able, the coal mining capacity would be going higher in the same proportion? So one is the demand based, one is the consumption based demand, sir, and second is the import substitution demand. So the coal mining really has to go up in a significant manner in order to comply with both these normals. One is whatever the target for the renewable and all such things, may it be in solar, may it be in wind or any other for that matter, we are exceeding our target, and target is being completed well before the time. This is a very proud moment for any Indian, because we are able to do that, and we are the world leader in that as far as renewable energy is concerned, and the emission and other such things are concerned. But at the same time, what I have said on 31st of last month is that the demand of electricity is going to be doubled, and even if you produce by renewable 50% of that, remaining 50% has to be taken care of the regular, that is thermal power. And with this thermal power also, how we should go for the sustainability, that is the challenge before us, and we are already working on that. For example, sapling of the maximum trees,
and using the mined water, all such things we are doing it, and also using the technology, coal gasification, using that because ultimately coal is available with us, and we are not able to meet out the entire demand through other sources, because very easily available source for many countries including India, it is the coal. So, when we are at present, I can tell you, if today whatever the explored coal mines are there, only the stock of reserve of those coal mines are taken into consideration, we have the stock of more than 350 years, 350 years. So, that we cannot all those coal we cannot allow it to become mud. So, how to use it with sustainable, because Honorable Prime Minister has promised to the world about the emission, and on 2070 how we are going to net zero, all whatever the Prime Minister has said, we are committed to that. And using the coal, how we can make sustainable, that we are already working, and work has started, and overall emission pollution, to reduce it, we have taken so many measures, and I am quite confident with using coal also, reducing the emission and making it net zero. With these balance, we will produce the electric power through coal also, through renewable energy also. Minister Joshi, if you are reassuring and endorsing that there will be no coal shortage in India, do you think the Power Ministry will come out with instructions where they essentially will now request generation companies to stop importing coal for blending purposes? Because up until now, the Power Ministry has still not come out with any instructions where they are requesting DISCOMs not to import imported coal for blending purposes. I think, seeing at the previous experience, he might have, Power Ministry has issued, but whatever the demand is coming from the all units, power generating, thermal power generating units, according to their requirement, whatever हमारा annual contracted quantity रहता है, उससे ज़्यादा ही हम सप्लाई कर रहे हैं. तो एक प्रिकॉशनरी मेजर, क्योंकि हर बार इस महीने में, इस 2-3 महीने में शॉर्टेज होता है, ऐसे सोच के कुछ सर्कुलर है, लेकिन वो सर्कुलर का उपयोग हो जाए ऐसे नौबत न आने देते, हम न आने देते, इतना तो मैं एश्योर करता हूँ. What I want to make it more clearly tell in English, that though the circular is there for the import, and I am assuring you that situation will not arise. That is my assurance. As a precautionary measure, Power Ministry has issued the circular, but as it is, I am supplying under the guidance of Prime Minister Shri Modi, I am supplying more than 100% of our ACQ contract, and that will going to be continued. So, Minister Joshi, in India, coal availability was always there. It was the entire extraction and the process which, in a sense, was not clear and clean. What has changed? What is giving you the confidence that coal supply will not be interrupted, and enough and more coal supply will be done through government companies? What has changed is what we want to understand from you, sir. One is, along with government companies, we are trying to involve the private sector also, because the government companies has got their own limitation, but still they have done well. I congratulate Coal India and other PSUs. And at the same time, we cannot depend on one company, one source. That's why we involved the private sector also. Second point, the question you asked about the why, though coal is available, why it was it was not available previously. See, it is the question of mentality, and it is the question of approach, question of attitude. ये क्या होता था, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है. मैंने पहले भी इसके बारे में बोला हूँ. प्रधानमंत्री जी ने एक चीज़ कहा था जब मैंने इस मिनिस्ट्री को संभाला था. उन्होंने ये कहा था, अगर हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो मैं समझ सकता हूँ, अगर हम कोल इंपोर्ट करते हैं तो देश के लिए हम पाप कर रहे हैं. ये प्रधानमंत्री जी ने बोला था. इसका अर्थ क्या है? ये कांग्रेस पार्टी का तरीका देखो, सोच देखो. दे एस्टैब्लिश्ड few mega power plants, imported based power plants.
हमारे देश में इतना कोयला है, लेकिन इंपोर्टेड बेस्ड पावर प्लांट्स मीन्स इंपोर्टेड कोल से ही चलता है, अभी भी वो इंपोर्ट करते हैं। क्यों इतना कोयला है? सोच क्यों नहीं आया? क्यों ऐसे इंपोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट हमको कंस्ट्रक्ट करना है, हमको तैयार करना है? हमको तो जो हम डोमेस्टिक कोल से अभी बाकी जो चला रहे, ऐसे ही कोल हम उत्पादन क्यों न करें? ये नहीं सोचा। कोल उत्पादन कम हुआ। कोल उत्पादन के लिए कम उत्पादन के लिए कारण यही कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकार है। लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए इंपोर्टेड बेस्ड पावर प्लांट, ये क्या तरीका है जी? तो ऐसे ही मैं मेरा एक उदाहरण आपको बताता हूँ। इन 1986, 87, 88, my father just got retired from the railway service. He was in a clerical post in railways, Indian Railways. After retirement, he constructed a house of 650 square feet, a small house. To get cement for that 650 square feet house, we used to stand in the queue for months together for the cement. इतना लाइमस्टोन है, हम सीमेंट के लिए महीने भर तक वेट करना पड़ता था, वो भी इंपोर्ट करना पड़ता था। ये सोच का सवाल है, ये अप्रोच का सवाल है, ये देश के लिए कैसे हम भला कर सकते हैं। ये जहाँ इस तरीका का सोच नहीं रहता है ना, वो लोग अच्छे नहीं कर सकते जी। कोयला इतना है, जैसे मैंने पहले कहा, इंपोर्टेड बेस्ड पावर प्लांट लगाते हैं हमारे पास। मैंने जैसे कहा 350 ईयर्स तक सफिशिएंट कोयला हमारे पास है, लेकिन हम कोयला इंपोर्ट करने की ही बात करते हैं। लेकिन अभी मोदी जी ने डायरेक्शन दिया है, प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्शन दिया है, एट एनी कॉस्ट 2024-25 तक हमको कोयला इंपोर्ट पूरा बंद करना चाहिए। कई लोग मुझे पूछते हैं, आप भी आके 10 साल हो गए क्यों नहीं करते? एक तो देश का इकोनॉमी बढ़ रहा है, पावर जनरेशन भी बढ़ रहा है। दूसरी बात, ये कोयला ब्लॉक शुरू करने के लिए, एक्चुअल ऑपरेशनलाइज करने के लिए 8 से 10 वर्ष लगता है, दुनिया में भी लगता है, देश में भी लगता है। इसीलिए अभी मोदी जी आके 10 वर्ष होने वाला जा रहे हैं। 10 वर्ष के अंदर आई एम अश्योरिंग द कंट्री दैट कोल इंपोर्ट विल बी स्टॉप्ड। Sir, there is a natural disadvantage what Indian coal has, the total calorific value. That is something which in a sense will always be a challenge when it comes to future coal requirement. What is the plan to tackle that? देखिए, एक तो जो कोकिंग कोल या मेटलर्जिक कोल है, थोड़ा कुछ वो इंपोर्ट करना पड़ता है। इसमें भी मैंने मेरे अधिकारियों को कहा है, जो पीएम साहब ने जो कहा था 2047 के लिए एक विजन बना दो, 2030 के लिए एक शॉर्ट टर्म विजन बना दो। मैंने ये भी कहा है, इस हाई कंटेंट कोल के जो ऐश है, उससे कैसे हम स्टील बना सकते हैं, इसमें भी थोड़ा रिसर्च वगैरह के लिए पैसा लगा दो। कोल इंडिया इज ए वेरी गुड प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें भी सोचो, ये भी हमारा सोच रहना चाहिए। और इसके साथ ही साथ तो दुनिया में टेक्नोलॉजी बहुत आ रहा है जी। ऐसे तो अभी गैस, कोल से गैस क्रिएट करके स्टील बना रहे हैं। ये सब टेक्नोलॉजी, नया टेक्नोलॉजी विथ दी कोल अवेलेबल विथ इंडिया, कोल अवेलेबल डोमेस्टिकली, हाउ कैन वी प्रोड्यूस द स्टील, इसके बारे में एक बार रिसर्च वगैरह करना चाहिए। तो ये रिसर्च के बारे में हम कोशिश चल रहा है। उसके साथ अगर ज़रूरत है तो भी कितने ब्लेंडिंग के लिए ज़रूरत है कोकिंग कोल, क्योंकि हम कोकिंग कोल मिशन भी चालू किया है। बाय 2030 we want to add 100 million tons of the coking coal to be produced by India. That is my target. For that purpose also we are working on that, and after getting that coal of 100 million ton and whatever the good quality, best quality coking coal is needed, that quality which has to be imported, that will be reduced. So minimum quality at the most some 50-60 million tons of the coking coal we may import at the most. Otherwise entire other coal, thermal coal, coking coal, little low quality coking coal, everything will make available in India. That is my assurance to the country as Prime Minister directed us. So the government, sir, had divested 3% stake in Coal India in 2023.
is there any proposal to divest government stake in Coal India more in 2024? No, Coal India, I am assuring the coal entire country that there is no question. The ownership of Coal India will be always with the government of India. A proposal to reduce some government stake. I mean, government may keep more than 51% stake, but could current stake, sir, is now down to 63. Could it come down to sub 60? That will be decided as and the time, as and when time comes. But I can tell you, the ownership will always remain with the, because it is the one of the critical sector, and government has decided to retain Coal India with as a government company, and the management will be with us always. Simplify the roadmap for Coal India and the capex plans for next 3 years and 5 years. As it is, if I can to quote the figure, we have more than investing 9,000 crores only for the first mile connectivity, and 3,000 odd million ton we are adding the transportation capacity through the technologies. These are all the things we are doing, and the reduction of the overall pollution, that is our main target, and we are working out accordingly. Throw some more light on the auction of rare metals. Now that rare metal mines and especially lithium reserves have been discovered in India, what is the plan there, sir? One is rare earth. One thing I would like to tell you before I could answer your question. Basically, what is the rare earth for the India? What is the rare earth minerals for the India? That list was also not there. But when Prime Minister guided to me, we decided to identify what are the rare earth minerals for the India. We have identified around 30 minerals. आप ये सोचिए, मोदी आने से पहले 60 years, more than 60 years, हमारे देश के लिए क्रिटिकल मिनरल्स कौन सा है ये आइडेंटिफाई भी नहीं हुआ था, लेकिन मोदी जी आने के बाद हमने क्रिटिकल मिनरल्स आइडेंटिफाई किया है। अभी फर्स्ट इसमें हमने 24 मिनरल्स हम अभी ऑक्शन के लिए लगे हैं। उसमें 2 लिथियम ब्लॉक्स है, और वो लिथियम ब्लॉक्स भी हमने ऑक्शन में लगे हुए हैं, और 100 रिपोर्ट्स 2 लिथियम ब्लॉक्स है, और एंड बाकी जो है हमारा 100 reports, GSI and MECL together they are handing the reports, and that also will bring it for the auction, and we are trying to provide for the, especially because for the deep seated and critical minerals exploration is the always challenging, and for that, and it will be expensive also. For that partially we are funding through NMET also, National Mineral Exploration Trust का fund जो हमारे पास है. For the first time we are providing to the state also, we are providing the fund to the state also for the even the purchase of the equipments and the exploration, and we are calling the state governments, आप पैसा ले लो, exploration कर लो, mining कर लो, sustainable mining करो, और उसके साथ जो revenue आता है आप रखो, आपको एक्सप्लोरेशन के लिए, आपको ऑक्शन के लिए पैसा मोदी सरकार देगी, लेकिन आप ऑक्शन करो, ऑक्शन करके आपका रेवेन्यू बढ़ा दो। ये तो कई भी शायद भारत देश के इस 75 वर्ष के इतिहास में कोई भी ऐसे नहीं किए होंगे। प्रधानमंत्री ने मुझे कहा आपका एनमेट का पैसा आप स्टेट को दे दो, स्टेट ऑक्शन करने दो, स्टेट एक्सप्लोरेशन करने दो, और स्टेट मशीनरी खरीदने दो। कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट मशीनरी खरीदने के लिए हम पैसे दे रहे हैं। अभी डायरेक्टर ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी इन द स्टेट गवर्नमेंट को हम सभी स्टेट गवर्नमेंट को बुला के आप एक्सप्लोरेशन के लिए, माइनिंग के लिए आपको जो इक्विपमेंट चाहिए, आपके लिए जो एक्सप्लोरेशन के लिए पैसा चाहिए, ये पैसा हम देंगे। ये हमने शुरू किया है, और इसके कारण सारे प्रदेश में जो प्रोग्रेसिव स्टेट्स थोड़ा
प्रदेश के हित के बारे में सोचते हैं, वो उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो और इवन छत्तीसगढ़ हो, ये इस प्रदेश में माइनिंग अच्छा हो रहा है अभी। तो मध्य प्रदेश में 3-4 गुना अभी रेवेन्यू बढ़ गया है और छत्तीसगढ़ में बढ़ा है, कर्नाटक में भी बढ़ा है। अभी कर्नाटक में अभी ऑक्शनिंग थोड़ा कम किया है। मैंने कर्नाटक गवर्नमेंट से निवेदन कर रहा हूँ ऑक्शन ज़्यादा करो करके। सो इस क्रिटिकल मिनरल्स में भी हमने 30 क्रिटिकल मिनरल्स आइडेंटिफाई किया है, उसमें 24 अवेलेबल है। उसमें पोटैश है, निकल है, मोलिब्डेनम है, फॉस्फेट है, पोटैश है, ग्राफाइट है, ग्लोसोनाइट है, ये सब है। उसके साथ लिथियम भी है and we have put it for the auction and very shortly I am confident we are auctioning it, but revenue will go to the state. Why we are auctioning? Because many states sometimes they are not capable of handling it and we are auctioning it, and after doing the auction all the revenue to last penny everything goes to the state government, but all auction process उसके लिए जो खर्चा है वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगा। और वो भी अगर ऑक्शन एक्सप्लोरेशन वगैरह करना चाहते हैं तो इंक्लूडिंग क्रिटिकल मिनरल्स हम भारत सरकार से एनमेट के थ्रू हम पैसा दे रहे हैं। दिस इज व्हाट द स्टेट्स आर गेटिंग एनकरेजमेंट फ्रॉम द मोदी गवर्नमेंट एंड दे आर गेटिंग द रेवेन्यू, वी आर स्पेंडिंग। So just like you've given a assurance and a promise that in the coming decade, India will not be importing coal, barring some special qualities of coal. Which are the rare metals and special minerals in which do you think in next 5 to 7 years India will be completely Atmanirbhar? See, whatever these critical minerals are there, especially in lithium ion battery, where the storage of the energy is the most important thing for the nowadays. In that sector we are trying, but it is too early to commit all those things because just we have started. Before Modi could come, all these things have not started. Just we have started, we have identified what are the minerals critical for India, which are called now critical minerals. And apart from that, we are putting money, we are providing money for the auctioning, exploration, all those things. And after ascertaining, and just first tranche of auction, just it has started. And after a year or so, I will be able to commit that. And I am quite confident we will be successful in this. At this moment, I'm very frank. As far as coal is concerned, as far as iron ore is concerned, as far as bauxite is concerned, as far as other limestone is concerned, I can say all such things will be 100% import free. But at the same time, these critical minerals, we have started working it out and process has already started, and I am quite hopeful. I am optimistic, but at the same time, I am not able to quantify at this moment. Final question. A lot has changed, sir, and a lot has changed for the entire coal and mining sector. Mindset, attitude, approach. What could be the next big reform or the change for your ministry? As it is, we have completed the offshore, onshore, critical minerals, deep-seated minerals, rare earth, everything. For that we have brought in policy. Let us see the reaction and the response of the ministry and how results will come up. After that, and now what I think is whatever we have brought in the changes, whatever the reforms we have brought in, जो कुछ भी हमने बदलाव लाया है, कानून में बदलाव लाया है, पॉलिसी में बदलाव लाया है, रूल में बदलाव लाया है, ये सब स्टेक होल्डर से बातचीत करके किया है। टेक्नोलॉजी भी विदेश से जहां हम स्टेक एक्वायर कर रहे हैं, क्योंकि लिथियम हमारे पास कम है, ऐसे जहां भी कोबाल्ट कम है, ऐसे दुनिया से भी हम जहां एक्वायर कर रहे हैं उधर भी हम उस देशों से भी हम टेक्नोलॉजी भी विद टेक्नोलॉजी के साथ हम स्टेक एक्वायर करने के लिए, उधर का माइन एक्वायर करने के लिए बातचीत चल रहा है। वो वेरी शॉर्टली हम कुछ देशों के साथ साइन भी करने वाला है।
जब ये सब होगा आगे ये इसका रिजल्ट और रिस्पांस देखते हुए हम आगे जो बदलाव लाना है वो डिसाइड करेंगे। लेकिन मैं ये इतना तो कह सकता हूँ, इस 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में जो कुछ भी किया है ये रिमार्केबल है, ये लैंडमार्क है। और मुझे विश्वास है इसी कारण जो कुछ भी कोल में प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है, आयरन ओर के प्रोडक्शन में ज़्यादा हुआ है, और अभी क्रिटिकल मिनरल्स का प्रोडक्शन शुरू होने जा रहा है। और हमने एक्सप्लोरेशन के लिए एक बहुत बड़ा फैसला दिया है। पहले तो एक्सप्लोरेशन के लिए लोग ही नहीं थे, अभी हम एक्सप्लोरेशन के लिए एक तो एम्पैनलमेंट भी किया है, और इसके साथ ही साथ क्रिटिकल मिनरल्स के लिए एक्सप्लोरेशन के लिए हम एडवांस पैसे दे रहा है, रीएम्बर्समेंट कर रहा है। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है शीघ्र ही हमको कुछ तो रिजल्ट मिलेगा, उससे और ज़्यादा सुधारने का ज़रूरत है तो वो भी हम सुधारेंगे। यही मैं आपको आश्वस्त करता हूँ और देश को आश्वस्त करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। मिनिस्टर जोशी, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला एंड यू जॉइंड अस ऑन ईटी नाउ एंड ईटी नाउ स्वदेश। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।